Morning students, myself Neetu Raina, and today I will discuss about data and qualitative data. Now, first of all, we should know about the meaning of data. What is data? Data means observations or evidence. The scientific behavioral researches required the data by means of some standardized research tools or self-designed instrument. So data are both qualitative and quantitative in nature. Now, data are collected for both variables as well as attributes. These are gathered in terms of frequency and score. It depends on the types of instrument employed for its measurement. The data can be classified in two broad categories. Number one is qualitative data, and number two is quantitative data. So what is qualitative data? Qualitative data is defined as the data that approximate and characterize. Qualitative data can be observed and recorded. This type of data is non-numerical in nature. This type of data is collected through method of observation, one-to-one interviews, conducting focus group, and similar methods. Qualitative data in statistics is also known as categorical data. Data that can be arranged categorically based on the attributes and properties of a thing or a phenomenon. The characteristics or traits for which numerical value cannot be assigned are called attributes, means quality. For example, motivation, confidence, honesty, इंटीग्रिटी. तो हम इन सब के लिए मार्क्स नहीं देंगे, इनके लिए हम एक कैटेगराइज कराएंगे, कैटेगरी देंगे, रेटिंग कर सकते हैं. What are the other examples of qualitative data? Qualitative data is also called categorical data since this data can be grouped according to category. जैसे हम कहते हैं good है, very good है, excellent है, superior है, inferior है, इस तरह से. For example, think of a student reading a paragraph from a book during one of the class sessions. A teacher who is listening to the reading gives feedback on how the child read that paragraph. If the teacher gives feedback on fluency, intonation, throwing of words, and clarity in pronunciation without giving a grade to the child, this is considered as an example of qualitative data. It is easy to understand the difference between qualitative and quantitative data. Qualitative data does not include number in its definition of traits, whereas quantitative data is all about numbers. For example, the cake is orange, blue, black in color. That is the example of qualitative, means you identify the cake with this color. Quality, attribute. Then females have brown, black, blonde, and red hair. This is also the example of qualitative data. Then comes qualitative data is in other hand, quantitative data is an quantifiable information that can be used for mathematical calculation or statistical analysis. This form of data helps in making real-life decisions based on mathematical derivations. Quantitative data is used to answer questions like how many, how often, how much. This can be validated and verified, which has number, which can be countable, that is quantifiable, that is called quantitative data. To better understand the concept of qualitative and quantitative data, it's best to observe the example of particular data sets, how they can be defined. The following are the examples of quantitative data. There are 4 cakes, 3 muffins in the basket. Now there is number, 4 cakes, 3 muffins. That is the example of quantitative data. Another example, 1 glass of fizzy drink has 97.5 calories. This is also the example of quantitative, quantified, number, countable. Then comes
what are the example or what is the importance of qualitative data? Qualitative data is important in determining the particular frequency of traits or characteristics. It allows the statisticians or the researcher to form parameters through which larger data sets can be observed. Qualitative data provides a means by which observer can quantify the world around them. For a market seller, collecting qualitative data helps in answering questions like who their customers are, what issues or problem they are facing, where they do need to focus their attention, so problem and issues are resolved. हम उनकी characteristics को देखेंगे, हम उनके attributes को देखेंगे, हम problems को देखेंगे, हम issues को देखेंगे, इन सब चीजों को हम qualitative data में search करते हैं. Qualitative data is all about the emotions or perception of people, what they feel. In quantitative data, these perceptions and emotions are documented. It helps market researchers understand the language their customers speak and deal with the problem effectively and efficiently. ये बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप कोई रिसर्च के लिए जाएं, जब भी आप डेटा कलेक्ट करें, whether it is qualitative or quantitative, but if you know the local area language, आपको बहुत help मिलती है. Then comes types of qualitative data. If we are doing research or we are collecting data through qualitative, so there are so many techniques, so many types. So क्या है? One-to-one interview. It is one of the most commonly used data collection instrument for qualitative research, mainly because of its personal approach. Because one-to-one interview means personal approach. These interviewer or the researcher collects data directly from the interview on one-to-one basis. The interview may be informal and unstructured. Conversational. Mostly the open-ended questions are asked spontaneously. Then with the interviewer, letting the flow of the interviewer dictate the question to be asked. कभी भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हम उसको पूछ सकते हैं. कोई भी हमने स्ट्रक्चर नहीं उसका फॉर्म किया है. या आप कह सकते हैं अनस्ट्रक्चर वे से हम उसका ले रहे हैं, सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. देन कम्स फोकस ग्रुप. नेम से ही पता लग गया, फोकस मीन्स कि जहां आपके रिसर्च से रिलेटेड जो है लोग हैं, आप उन्हीं को टारगेट करोगे. अगर मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेकर डेटा लेना है, तो आई विल टारगेट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या उनमें पढ़ाने वाले लोग. मेरे को बाकी मार्केट में क्या सर्च हो रही है वो नहीं करना है. तो दिस इज डन इन ए ग्रुप डिस्कशन सेटिंग. द ग्रुप इज लिमिटेड टू 6 to 10 people and a moderate is assigned to moderate the ongoing discussion. Depending on the data which is sorted, member of the group may have something is common. कुछ common trait होने चाहिए. For example, researcher conducted a study on the track runners. Will choose athlete who are track runners or were track runners and have sufficient knowledge of the subject matter. हमें एथलीट्स के बारे में नॉलेज चाहिए थी, वो किस तरह से रनिंग करते हैं, क्या करते हैं, तो हमने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया, उसी ग्रुप को लिया. That is called a focus group. Then comes record keeping. This method uses existing reliable document and similar source of information as the data source. This data can be used in new research. It is similar to going to the library. There one can go over books and other reference material to collect relevant data, and that can be used in the research. Process of observation. In this qualitative data collection method, the researcher immerses himself or herself in the setting where his respondents are. Keep a keen eye on the participant and take down notes. This is known as the process of observation. Besides taking notes, other documentation methods such as video, audio recording, photography, and similar methods can be used. For example, जब आप observation करते हैं, आप observe कर रहे हैं किसी चीज को, किसी जगह को, आप उसके बारे में थोड़े बहुत notes लिख रहे हैं. Beside that, आप वहाँ पे आने वाले लोगों को भी observe कर रहे हैं, चाहे उनको मालूम है या नहीं मालूम, आप observation कर रहे हैं. Then आप notes keep कर रहे हैं, आप documentation कहाँ था, क्या से कैसे हुआ, वो सब ले रहे हैं. प्लस आप अपनी ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफी
ये सब चीजें भी आप अपने ऑब्जर्वेशन के साथ ले रहे हैं या कर रहे हैं. दिस इज द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. देन कम्स longitudinal studies. This data collection method is performed on the same data source repeatedly over an extended period. It is an observational research method that goes on for a few years, and in some cases, that goes on for a few decades. This data collection method aims to find correlation through an empirical study of subjects with common traits. Basically, longitudinal studies होती क्या है? Basically, in longitudinal studies में there is very comprehensive, they are very wide. Maybe हमें कुछ सर्च करना है कि what are the cultural practices of the 1980s and 2000. हमने बीच में 20 years का ले लिया. हम उनमें स्टडी कर रहे हैं और कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं, कौन सी सिमिलर थी और कौन सी सिमिलर नहीं थी. जो सिमिलर थी उनमें हम कोरिलेशन देख रहे हैं. तो कुछ स्टडीज हम कुछ पीरियड के लिए ले सकते हैं और कुछ डिकेड्स के लिए भी ले सकते हैं. एंड दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज. इसको कंपाइल करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी. देन कम्स अ केस स्टडी. In this method, data is gathered by in-depth analysis of case studies. The versatility of this method is demonstrated in how this method can be used to analyze both simple and complex subjects. The strength of this method is how judiciously it uses a combination of one or two qualitative data collection method to draw inferences. Basically, we do case studies to draw inferences, conclusion कि क्या matter है. For example, एक delinquent child है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेलिक्वेंट है, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम दिखी, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है. देन वी डू द केस स्टडी. जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको पूछता है बुखार था, कितने दिन था, कब तक था, कहाँ कब से आ रहा है, तो वो कुछ आपके बारे में स्टडी करता है. दैट इज नॉट अ केस स्टडी. पर केस स्टडी इससे भी बियॉन्ड है. हम उस चाइल्ड के बारे में पहले देखते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसके नेबर कैसे थे, उसके सिबलिंग कैसे थे, उसके इमोशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी. तो हम एक स्टडी एक रेडी करते हैं, उसके लिए केस स्टडी तैयार करते हैं कि कहाँ उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी. वो टूरेंट बन गया, पहले टूरेंसी आ गई और एक फॉर्म उसने डेलिक्वेंसी में वो चेंज हो गई, वो डेलिक्वेंट बन गया. तो एक पूरी केस स्टडी तैयार की जाती है. एंड दिस इज द स्टडी विच इज अंडर क्वालिटेटिव. ये क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वालिटेटिव नेचर है इसका. और इससे हम एक इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन्स पहुंचते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, why the child is delinquent. Then comes approaches to qualitative data analysis. There are basically two main approaches. Number one is deductive approach and number two is inductive approach. Deductive involves analyzing qualitative data based on the structure that is predetermined by the researcher. जो पहले से ही पता था, वैसे ही रिस्पॉन्सेस पूछने हैं, वैसे ही पॉपुलेशन को पूछना है, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया था, तो वहां पे वो डिडक्टिव अप्रोच यूज करता है. पर जहां पर रिसर्चर को कोई आइडिया नहीं है, किसी तरह का कुछ पता नहीं है, कोई स्ट्रक्चर रेडी नहीं किया है उसने, कोई ग्राउंड ने काम किया है, और वहां पे वो इंडक्टिव अप्रोच से अपने आइडियाज को रिसर्च की तरफ लेके जाता है. एंड माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच. देन कम्स स्टेप्स टू क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस. ठीक है, आप रिसर्च कर रहे थे, आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे, बट व्हाट आर द स्टेप्स? क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं, सिस्टमैटिकली नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइज वे से नहीं करते हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारा जो काम है, इट इज जस्ट ऑल वेस्टेड. नंबर वन इज one should arrange the data. Once we have collected all the data, it is largely unstructured and sometimes make no sense when looked at the glance. Therefore, it is essential that as a researcher, we first need to transcribe the data collected. The first step in analyzing your data is arranging it systematically. Arranging data means converting all type of data into text format. We can either export the data into spreadsheet or manually type in data or choose any type of computer assisted qualitative data analysis tool. हम arrange करेंगे data को, बहुत huge number में हमारे पास open ended questions थे, तो हम उसको अरेंज करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव वाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या हम उसकी मैनुअल शीट रेडी करेंगे, या हम कंप्यूटर की हेल्प से उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे, या कोई भी टेक्निक फॉलो करेंगे. Then comes organize the data. We can transfer and arranging the data. Then immediate step is organize the data.
द बेस्ट वे इज टू ऑर्गेनाइज द डेटा अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि पहला ऑब्जेक्टिव मुझे ये कहता है टू आइडेंटिफाई द डेलिक्वेंट स्टूडेंट। तो डेलिक्वेंट जो मैंने डेटा लिया है, तो पहले तो मैं उसको ही उस डेटा को अलग कर लूंगी, उसको कैटेगोरिकली डिफाइन कर लूंगी अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, या कंप्यूटर में उसको मैं फीड कर लूंगी उनके स्कोर्स को, उनके नंबर्स को, या उनके ओपन एंडेड क्वेश्चंस को, किस तरह का वो मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। तो इस तरह से मैं उसको यहाँ टेबल ड्रॉ करूंगी या क्लैरिटी लूंगी उसमें से, या ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करूंगी। इस तरह से पहले मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँ, then I can do it with the coding. Number third step is to set a code to the data collection. Then coding of quality data simply means categorizing and assigning properties and pattern to the collected data. I do categorically, मैं उसको define करूंगी। मेरा पहला objective delinquency पे था, दूसरा मेरे education institutions में था। तो उस तरह के डेटा का कितना नंबर था, ये कैसे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या थे, उनका ग्राफ कैसे बना, उनका इंटरव्यू शेड्यूल कैसे बनाया, तो ये सब मैं उसमें कोड करूंगी। आफ्टर assigning code to the data, one can begin to build on the pattern, gain in depth insight into the data. डेटा मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन बार बार मैं उसको कोडिंग कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग फ्रेम कर रही हूँ, और बार बार डेप्थली उसको पढ़ती जा रही हूँ या उसको देख रही हूँ कि उसमें से मुझे क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो रही। देन कम डेटा है, लेकिन वैलिडेशन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना सही है। Validating data is one of the crucial steps of qualitative data analysis. चाहे वो आपकी qualitative study है, quantitative, validation is very important for successful research. Since data is quintessential for research, it is imperative to ensure that the data is not flawed. आपका data crooked नहीं होना चाहिए, biased नहीं होना चाहिए. Data validation is not just one step in qualitative data analysis. This is a recurring step that needs to be followed through the research process. हम दो तरह से वैलिडेट करते हैं। नंबर वन, एक्यूरेसी ऑफ योर रिसर्च डिजाइन। हमने एक डिजाइन रेडी किया है कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को इन मेथड्स के थ्रू करेंगे। क्या वो मेरा मेथड ठीक है, क्या मेरा डिजाइन एक्यूरेट है, मेरा डेटा जो मैंने लिया वो एक्यूरेट है। नंबर टू इज रिलायबिलिटी, हाउ मच डेटा इज रिलायबल। रिलायबिलिटी मीन जितनी बार भी मैं उसको चेक करती हूँ तो रिलायबिलिटी इज ऑलवेज 100%। वो मुझे कंसिस्टेंसी वही बता रहा है कि कंसिस्टेंटली मेरा जो रिजल्ट है यही आ रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इट मीन्स मेरा डेटा जो है वो रिलायबल, कंसिस्टेंटली उसके आंसर्स वही हैं। देन कंक्लूडिंग द डेटा एनालिसिस प्रोसेस, मैंने उसको अरेंज कर लिया, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर लिया, कैटेगराइज कर ली, कोडिंग कर ली, एंड देन इज द एनालिसिस पार्ट। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइनली कंक्लूड द डेटा, which means systematically presenting the data. A report is readily used. एक report मैं ready करूंगी, कुछ inferences draw करूंगी. The report should state the method used to conduct the research study. Yes, मेरा first objective था, इसमें मैंने interview schedule बनाया. After that, I will do percentage and that I will plot the graph. अब उसमें मैंने frequency graph बनाया या histogram बनाया, या both graphs मैंने कुछ और तरह के लिए कैसे graphs बनाया, मेरी report में वो क्या बता रहा है। तो रिपोर्ट शुड स्टेट द मेथड यूज्ड टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, इस तरह से होता है। एंड द स्टडी लिमिटेशंस, कि मेरी लिमिटेशंस मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट्स में किया था तो 100 ही मेरी लिमिटेशंस है, मतलब इन्हीं के साथ मैं चलूंगी। इन द रिपोर्ट वन शुड आल्सो स्टेट द सजेशंस। अब मैं रिपोर्ट में अपनी लिमिटेशंस बता रही हूँ, अपने आंसर्स बता रही हूँ, वेदर पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, कुछ सजेशंस दे रही हूँ, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रही हूँ, सो दैट कि मेरी रिसर्च मैंने कुछ लिमिटेड एरिया में किया तो वहीं कन्फाइंड नहीं है। आने वाले टाइम पे मेरी रिसर्च जो है वो आगे तक लेके चलेगी और वो फ्यूचर रिसर्च में भी हेल्प करेगी। Then comes advantages of qualitative data. Number one, it helps in depth analysis. कि जब हमें डेप्थ में जाना है, इनसाइट लर्निंग करनी है, तो वी ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटेटिव डेटा। और रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। कैसे इंफॉर्मेशन भी हम ऐसे नहीं गैदर कर सकते ना, व्हेन वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस भी कैसे हो, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, वी हैव द क्वेश्चंस विद अस, आंसर, डेटा इज कलेक्टेड, इज यूज्ड टू कन्वर्ट, सो दैट जो भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके जो आंसर्स आ रहे हैं, वेदर इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, उनके क्या आंसर्स हैं, कैसे थे वो, so that we can, it is helpful in conclusion. Understand what customer think.
हमें किसी चीज का सर्वे कर रहे हैं कि प्रोडक्ट यूजफुल था, हमने कैसे कर ले कि यूजफुल था, बिकॉज हमने सबसे वो क्वेश्चंस पूछे, सबके पास गए और ये सोचा कि कस्टमर की डिमांड क्या थी, कस्टमर सोचता क्या है, ठीक है। और बहुत बार हमें जब कस्टमर की लोकल लैंग्वेज पता है या कस्टमर तक पहुंच जाते हैं हम, तो भी हमें बहुत बार बहुत हद तक हम अपने डेटा को अच्छे से गैदर कर सकते हैं। बहुत बार हम इंफॉर्मेशन पर ट्रूली ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो हम बेशक हम इंग्लिश मोड से जा रहे हैं या हिंदी मोड से जा रहे हैं और वहाँ पे शायद पहाड़ी है या डोगरी है या कोई और मीडियम लैंग्वेज का है, पर इफ वी आर लिटिल अबाउट नो अबाउट द लोकल लैंग्वेज या उस कस्टमर की लैंग्वेज, तो देखना वो बड़ा फ्रेंडली हो जाता है आपके साथ और इजीली सारे रिस्पॉन्सेज आपको बड़े अच्छे से मिलते हैं। सो वी शुड नो अबाउट व्हाट कस्टमर थिंक। देन कम्स रिच डेटा। हमारा डेटा तो है, पर हम उसको रिच कैसे कर सकते हैं? तो कलेक्टेड डेटा कैन बी यूज टू कंडक्ट रिसर्च इन फ्यूचर एज वेल। रिच डेटा मीन्स डेटा जो कि क्रूड नहीं था, बायस नहीं था, ऐसा नहीं था कि फर्दर यूज नहीं होगा। कुछ स्टडीज वही डेटा को आगे लेके चलेंगी फर्दर रिसर्च के लिए, बिकॉज रिसर्च का मतलब ही ये है टू सर्च अगेन एंड अगेन। Then the question asked to collect qualitative data are open-ended questions. तो open-ended questions को compile करना और उसकी स्टडी को पूरी तरह से you can say that conclusion में लेके आना और inferences draw करना, it is one of the tedious job. So respondents are free to express their opinion. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन सेटअप करने पड़ेंगे कि रिस्पॉन्डेंट जो है अपने आंसर्स को बड़े अच्छे से बता रहा है, फ्रीली बता रहा है और बता रहा है। जो इंफॉर्मेशन शायद हमने थोड़ा सा कम भी रखा था, वो उसको उसके बियॉन्ड जाके भी बताने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स आवर डेटा इज वेरी रिच, वेरी एक्यूरेट। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। नंबर वन इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और हम सब लोगों को नहीं ले सकते। ओनली फ्यूर पीपल आर स्टडीइंग इन कंपैरिजन टू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव डेटा। टाइम, बजट और स्मॉल सैंपल के साथ हमें कई बार जाना पड़ता है, बिकॉज ऐसी स्टडीज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, उनको इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन तक लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। So it is not easy to generalize qualitative studies, very difficult. And number third is dependent on the researcher skills. Yes, आप किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वन टू वन इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फोकस ग्रुप कर रहे हैं, तो इसमें रिसर्चर की स्किल, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसके सैंपल कैसा है, उसने इंफॉर्मेशन कैसे ली, उसने डेटा कैसे कलेक्ट किया, बहुत मैटर करता है। और कहीं भी अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हैं या आपको पता नहीं है या आपने पूरी तरह से नहीं लिया, तो यू कैनट हैव रिच डेटा विद यू। आपके पास डेटा तो आएगा, पर वैसी इंफॉर्मेशन जैसे आपको चाहिए थी वैसे नहीं आई। देन कम्स, इसी में हम नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी में ही, दैट इज इंटरव्यू। नाम से बहुत इजी लगता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारी टाइप्स हैं। This is one of the most common format of data collection in qualitative research. According to Oakley, the qualitative interview is a type of framework in which the practices and standard be not only recorded, but also achieved, challenged, as well as improved. As no research interview lacks structure, most qualitative research interviews are either semi-structured, light structure, in-depth, and sometimes unstructured interviews are generally suggested in conducting long-time field work, allow respondent to let them express themselves in their own ways, pace, minimum hold of respondent response. Pioneer of ethnography developed the use of unstructured interview with local key information, thereby collecting data through observation, recording field notes, as well as involving themselves with study. And to be precise, unstructured interview resemble a conversation more than an interview. It is always to be controlled conversation. It is skewed toward the interest of the interview. Non-directive interview, a form of unstructured interview, are aimed to gather in-depth information and usually don't have a pre-planned set of questions. Another type of unstructured interview is a focused interview, in which the interviewer is well aware of respondent. In time of deviating away from the interview, informal conversational interview
based on unplanned set of questions that are generated instantly during the interview. आप फोकस इंटरव्यू भी ले सकते हैं, आप स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी ले सकते हैं, आप अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू भी ले सकते हैं. So it is depend on the study. In contrast, semi-structured interview are those in-depth interview where the respondent must answer preset questions that are open-ended questions and thus are widely employed by different healthcare professionals in the research. तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हेल्थ केयर रिसर्चेज में यूज होती हैं और यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मिनिमम ड्यूरेशन इसकी जो है 30 मिनट्स होती है, या आप 1 घंटे तक भी जा सकते हैं. सिमिलरली इन फोकस ग्रुप में इनवाइटेड ग्रुप ऑफ पीपल आर इंटरव्यूड इन ए डिस्कशन, setting is presence or setting or session moderation, and generally these discussion last for 90 minutes. You know कि आपने किस ग्रुप को बुलाया है, कैसे लोग आने वाले हैं, पहले से ही सेटिंग है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, and discussion may go for the 90 minutes or more than that. Like every such technique has its own merits and demerits. Group discussions have some intrinsic worth in expressing the opinion openly of the participant. On the contrary, in these type of discussion setting, limited issues can be focused, and this may lead to generation of pure initiative and suggestions for the research topic. ये हम डिस्कस तो करते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस में डिस्कशन चलती हैं या हमारे टॉपिक के रिलेटेड होती हैं. यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड में हम अनप्लान्ड होते हैं, कोई हमने पहले से कोई गोल नहीं बनाया है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो वो रिस्पोंडेंट के लिए भी फ्रीली है कि आप जब चाहे जितना चाहे वो बोल सकता है, बता सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं. Now, what are the characteristics of interview? According to Black and Champion, there are certain characteristics. Number one is personal communication. Obviously, interview में face to face interaction होता है, contact होता है, conversational exchange होता है, verbal interaction होती है between the interviewer and the interview. Equal status होता है दोनों का, दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बैठे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं. क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड रिस्पॉन्सेज आर रिसीव्ड वर्बली. आप वर्बली ही ले रहे हैं. आपकी इंफॉर्मेशन कई बार रिकॉर्ड भी की जा सकती है. रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू हु आर स्टेइंग टू ईच अदर इज ट्रांजिटरी. धीरे धीरे आप फ्रेंडली होने लगते हैं. जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको पहले थोड़ा सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप फ्री हो जाते हैं, यू कैन फ्रीली आस्क एनी क्वेश्चन की नहीं मुझे ये नहीं पता चला, या फिर यू आर इजी टू रिस्पॉन्ड एनी क्वेश्चन. इंटरव्यू इज नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू 2 पर्सन. समटाइम 2 बंदों का ही इंटरव्यू नहीं होता है, 2 से ज्यादा या ग्रुप का भी इंटरव्यू हो सकता है. और इट इज कंसिडरेबली फ्लेक्सिबल इन द फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर. एंड नंबर सेकेंड इज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. बहुत टाइप से आप ले सकते हो. स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, स्टैंडर्डाइज, अनस्टैंडर्डाइज, इंडिविजुअल है, ग्रुप इंटरव्यू है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरव्यू है, यूनिक इंटरव्यू है, पैनल इंटरव्यू है, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल इंटरव्यू है. एंड अदर टाइप में फोकस्ड है आपका इंटरव्यू, टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेते हैं आप, कंप्यूटर से इंटरव्यू ले सकते हैं. देन कम्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. In the unstructured interview, there is no specification in wording of the question or the order of the question. अगर order बनाया भी है, आप कभी भी कोई भी question पहले पूछ सकते हैं, नाम से पूछ सकते हैं, नाम से start कर सकते हैं, topic से start कर सकते हैं. The interviewer form questions as and when required. The structure of these interview is flexible, very flexible, and being presented in the form of guide. In simple words, in this interview, the interviewer has only the general nature of questions in mind. कैसे थे, कहाँ आए, कैसे रहे, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, इस तरह के क्वेश्चंस वो पहले पूछता है. And no prior indication of the specific issues on which the questions are to be asked. And the questions are not in the order form. और कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कंडक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू. Thus, what is asked for one respondent in the beginning may be asked for the other respondent in the end. बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट हैं, तो जो क्वेश्चन आपने पहले किसी से पूछा तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे से भी आप पहले वही पूछ सकते हैं. आप कभी भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मिडिल में पूछ सकते हैं. सिमिलरली सम क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम सम रिस्पॉन्डेंट, मे नॉट ऑल द रिस्पॉन्डेंट. किसी का हाल चाल पूछा, ये जरूरी नहीं कि सबका ही आपने पूछा.
So questions may be not be worded in the same way. One or two particular facets may be concentrated in one interview, but other phases in another interview. This type of interview is mostly used in qualitative research. Then comes structured interview. The naam se pata lag raha hai, and it is designed in a structured manner and which is little different from the questionnaire. In reality, there is a set of specific points honge, definite questions honge, and that should be prepared by the interviewer. It allows little freedom to make adjustment of any kind of element, such as content, wording, order of questions. In this type of interviewing, the interviewer is expected to act in a neutral manner, offering the same impression to all the respondents. न्यूट्रल रहता है और सबसे ऑलमोस्ट एक जैसे ही ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहे तो ऑर्डर में ही पूछेगा. The purpose is to reduce the interviewer bias to minimum and achieve the highest degree of informality in the procedure. This form of interview is employed in quantitative research and it is mostly used in quantitative research. Then come in this type of interview, specific set of interview hota hai, regulating questions hai, range of response hai, controlling the interviews, interviewee characteristics, limitation, the facets of problems, all these are regulated. Then comes regulating the questions, range of responses mean determining the questions, order in which they are to be asked or the respondent. This requires either developing the interview schedule or the interview guide. The responses are regulated by offering one choice for several alternatives. Sometimes alternative responses are provided to the respondent, indicating the range of responses from which an answer to be selected. आपको different options मिलते हैं and you have to select only one. Then comes controlling interviewer-interviewee characteristics, mean developing such a relationship between the two that the respondent goes on giving information willingly and the interviewer goes on encouraging the respondent to continue talking. आप कंट्रोल कर रहे हैं, साथ साथ में आप बड़े फ्रेंडली हो रहे हैं और पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इंटरव्यूई को कि आप अपने रिस्पॉन्सेज को अच्छी तरह से बताएं. Sometimes you are more worldly. Limited the facets of the problem means determining in advance what the interviewer wants to find out from the respondent. बेशक वो बात कर रहा है लेकिन वो ये भी जानता है कि मुझे उससे फाइंड आउट क्या करना है, मैं किसके रिलेटेड पूछ रहा हूँ. This includes not only narrowing the range of items, but also for conducting the interview. Then comes standardized versus unstandardized interview. In standardized interview, the answer to each question is standardized, as it is determined by the set of responses categories given for this purpose. The respondents are expected to choose one of the given option as the answer. For example, the alternative answers could be yes, no, don't know, agree, disagree. So sometimes illiterate and less educated person can also choose the answer. This is mainly used in quantitative research. The unstandardized interview is one in which the responses are left open to the respondent. This is used mainly in qualitative research. Then comes individual versus group interview. From the name, we can identify individual means one at a time. And group means a small group of people, maybe 10%, 20%, co-workers, husband, wife, class of students. These are included in the group interview. Then comes self-administered and other administered interview. In a self-administered interview, the respondent is supplied a list of questions along with instructions for writing answers in the appropriate place of interview. And in contrary, in other administrative interview, the interviewer himself write answer to the questions on the response sheet. Then comes unique versus panel interview. Unique interview is one in which the interviewer collects entire information in one interview. सारी तरह की information वो collect करना चाहता है, कैसी भी,
किसी भी तरीके से हाल चाल पूछ के, कैसे क्वेश्चन सेट करके, कि ताकि वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसके बारे में ड्रॉ कर सके. However, it is not barred from approaching the interview from the second time for selecting additional information. But in a panel interview, the interviewer collects information from the same group of the respondent 2 or more times at irregular intervals. If different respondents are involved in various stages for asking the same question, it is called friend study. आपने पैनल इंटरव्यू बहुत बार दिया होगा, किसी जॉब के लिए जाते हैं तो यू आर गॉन फॉर द पैनल इंटरव्यू, तो आपको लगता है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एरिया के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बारी बारी से, वन एट ए टाइम, रेगुलर इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली. Then comes soft versus hard interview. In a soft interview, so the interviewer holds a second position in the process of data collection. He guides respondent without putting any pressure on them. नाम से ही पता लगा सॉफ्ट इंटरव्यू, आप उससे इंटरव्यू लेना चाहते हैं बट वेरी सॉफ्ट तरीके से, आप प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, आप बार बार कुछ ऐसी डिमांड्स नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उन क्वेश्चंस को नहीं बड़े ध्यान से पूछ रहे हैं जो उसको हर्ट कर सकते हैं या फिर वो बताना नहीं चाहता है, तो वो अपनी पोजीशन को सेकंड रखता है और इंटरव्यूअर व्यू को फर्स्ट प्लेस पर रखता है ताकि वो इजीली सारे रिस्पॉन्सेज को बता सके. बट इन द हार्ड इंटरव्यू एंड इंटरव्यू रिसेंबल ए पुलिस इंटरोगेशन, लाइक वहाँ पे एक तरह का इंटरव्यू चलता है लेकिन वो आपसे बड़े स्ट्रिक्टली बड़े हार्ड तरीके से पूछते हैं एंड यू मस्ट आंसर. आप डिनाई नहीं कर सकते, यू मस्ट गो सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ता है. Then the interviewer questions the validity and the completeness of the answer obtained after warning the respondent not to lie, forcing them to give an answer when they hesitate. अगर वो hesitate करता है, बताने से भी करता है, पर उसको strictly बोला जाता है कि you have to answer these questions. इसके बिना आपको you cannot allow or you cannot go somewhere else. तब तक आप इन questions के answers नहीं करते हैं और you should be trustworthy and you should maintain your faith and you should not allow to lie on these questions. So this type of interview appears more in quantitative than in qualitative form. Then comes personal versus non-personal interview. In the personal interview, obvious है आप personally वो information देना चाहते थे तो वो interviewer आप तक पहुंचेगा. Yes, अगर हमें टीचर्स तक पहुंचे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, लेकिन अगर वो टीचर्स दे आर फ्रीली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं और वो हमारी रिसर्च का पार्ट का बनना चाहते हैं, देन ओनली वी कैन अप्रोच देम. दैट इज कॉल्ड द पर्सनल इंटरव्यू, किसमें इंटरव्यू भी एग्री है आपको इंटरव्यू देने के लिए. इन द पर्सनल इंटरव्यू देयर इज अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट between the interviewer and the interview, while in the non-personal interview there is no face-to-face relationship. नहीं हो सकता है. आप किसी और मीडियम से भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं. आप गूगल फॉर्म की हमारे पास फैसिलिटी है, आप उसके थ्रू ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, बाय एनी अदर मीडियम जिससे आप इजी हैं. बिकॉज कोविड-19 में भी आपने देखा हमने सर्वे किए बिकॉज देयर इज वेरी लेस चांस टू फेस इंटरेक्शन. तो इन्हीं टेक्निक से हमने नॉन पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हमने अपनी रिसर्च कंडक्ट की है और स्टडीज की हैं. Then comes focus interview. नाम से ही पता है, focused on a specific topic, focused on a specific population, focused on a specific sample. The respondent are subjected to have same experience होना चाहिए. और for example, अगर we have to study prisoner in jail about the restriction on the freedom, तो हम उसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, उसी ग्रुप के पास जा रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसी के अंदर रहने वालों से एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, कैसा वर्क इन्वायरमेंट है, क्या रिक्रिएशन फैसिलिटीज हैं, कैसी इंटरेक्शन होती है, क्या फ्रीडम मिलती है आपको. तो these are some of the examples of the focus interview. And telephonical interview, by the name suggested, telephonically we have asked certain questions to the interviewee and हम ये चाहेंगे कि वो बड़े ही आराम से उसको आंसर्स दें. एंड वी कीप क्योंकि सब तो याद नहीं रहता, तो हम अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग मोड में भी रख सकते हैं कई बार, कि हम उनको पूरे उनके जो व्यूज़ हैं विदाउट इंटरप्टिंग मोर, हम उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें. बट इट इज़ नॉट मोर कॉमनली इन इंडिया, इट इज़ कॉमन इन द वेस्टर्न सोसाइटी और ग्रेजुअली अर्बन एरियाज में हम देखते हैं इस तरह के इंटरव्यू को.
और वी कैन मोर यूज इंटरव्यू बाय न्यूज़पेपर से, रेडियो, टीवी पर्सनल से और पब्लिक ओपिनियन से. फॉर एग्जाम्पल बजट के लिए रिएक्शन पूछना है, वी गो फॉर दैट सर्वे. ओपिनियन ऑन द इलेक्शन रिजल्ट के लिए सडन इंक्रीज इन पेट्रोल एंड कुकिंग गैस प्राइसेस, तो हम पहुंच जाते हैं. मतलब आपने टीवी में भी कई बार देखा होता है, जगह जगह जाके या किसी लोकल एरियाज में जाके वी टारगेट दैट पॉपुलेशन, और इस ग्रुप के पॉपुलेशन को पूछते हैं कि आपके क्या व्यूज हैं, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन कैसी रहेगी या इकोनॉमी पे कैसा असर रहेगा. तो इस तरह की यहाँ क्राइम रेट सोसाइटी में कैसा रहा, कुछ एक्टिविटी हुई तो कैसा आपको लगता है, कम्युनल राइट सिटी में है तो इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा बाकी सेक्टर्स पे, एजुकेशन पे. तो इस तरह के इंटरव्यू हम कंडक्ट कर सकते हैं. देन कंप्यूटर इंटरव्यू. तो अगर आप, ये तो पता ही है आजकल की, आप विद द हेल्प ऑफ फोन और कंप्यूटर हम गूगल मीट से या आप कह सकते हैं अपने जूम से, स्काइपी से, डिफरेंट हमारे पास मोड्स हैं विच कैन विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू इंटरव्यू. और अपना सेशन भी चला रहे हैं, सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं. तो ये ज़्यादा कोविड में पॉपुलर हुआ और अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है इंडिया में, बट इट इज़ वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्री. बट जो इंटरव्यू ले रहा है, देयर आर सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द इंटरव्यूअर. Number one is honesty. He should be very honest. He should keep the record of the respondent. Should not be biased. He should be interested. को अपना disinterest show नहीं करना है. He should be quite interested while taking the interview. Eye contact बनाना है, face to face interaction करना है और questions बड़े relevant पूछने हैं, accurate पूछने हैं, bias नहीं होना है, record accurately करना है, data सही होना चाहिए. क्योंकि अगर डेटा ही ठीक नहीं होगा, इंटरव्यू कंडक्ट सही नहीं किया होगा तो कोई रिजल्ट भी कभी सही नहीं आएंगे. That is bias. Then comes adaptability. One should be adapt in different situations. अगर आप किसी ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसे इंटरव्यू इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द इलिटरेट पीपल आल्सो. तो बड़े सारा फ्रेंडली भी वो नहीं होंगे, लेकिन यू शुड अडॉप्ट योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन. आप में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए. यू शुड हैव द एबिलिटी टू अडैप्ट yourself from the situation according to the respondent, because they are also facing certain kind of problem. तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. Then comes you have keep your temperament cool. ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आज उसके पर्सनल इमोशंस को हर्ट कर गए तो वन शुड बी वेरी वेरी कूल एट दैट टाइम. किसी ने कुछ सुना भी दिया, यू शुड नॉट बी ओवर एग्रेसिव या ओवर सोशिएबल भी नहीं होना है, अग्रेसिव भी नहीं होना और सोशिएबल भी नहीं होना. इंटरव्यू ही ले रहे थे, इंटरव्यू ही नहीं लिया, कुछ और ही पूछ लिया. नॉट लाइक दैट. शुड बी बिजनेस लाइक मैनर, प्लेजेंट होना चाहिए. यू शुड नो कि आपने इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी है तो किस तरह से करनी है, किस तरह से क्वेश्चन है, ताकि अगले के भी इमोशंस हर्ट ना हो और वो भी बड़े सॉफ्टली आपको बता सके और आप भी अपने टेम्परामेंट को कूल रख के वो सारी चीजें कंडक्ट कर सके. इंटेलिजेंस यहाँ बहुत मैटर करती है. इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन जो है, उसको एबिलिटी जो है उसकी, ओनली दैट हेल्प टू टेक द सक्सेसफुल इंटरव्यू. क्योंकि वो अडाप्ट करना सिखाती है सिचुएशन में आपको. इंटेलिजेंस मैटर्स. एजुकेशन, लाइक व्हेन यू आर डील विद द लेस एजुकेटेड पर्सन या इलिटरेट पीपल से प्रॉब्लम इज देयर कि वो बड़ी जल्दी फ्रेंडली नहीं होंगे. जब होंगे तो वो सब कुछ बता देंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे. तो लेस एजुकेटेड पर्सन भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको अपना इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए यू हैव सर्टेन स्किल्स विद यू. ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस. यस, आप कुछ भी बता रहे हैं, कोई भी सर्वे करने आए हैं, इट इज नॉट टू द टैक्सेशन डिपार्टमेंट, या ऐसा नहीं है कि हम कुछ ले जाएंगे. इट शुड बी विद यू. Your answers are confidentially, किसी को बताए नहीं जाएंगे. It is a part of our study. ऐसी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं. Then the process of interview. आप इंटरव्यू तो ले रहे हैं, बट फर्स्ट यू डिसाइडेड what are the objectives of the study. कहीं आप इधर उधर ना हो जाए, बट मतलब ये एम तो होना ही चाहिए ना. What is the aim? क्या आप पूछने जा रहे हैं, कैसा पूछने जा रहे हैं और कितना पूछने जा रहे हैं. So what is your sample? First of all, what is your population? कैसी पॉपुलेशन है, व्हाट वेयर इज द सैंपल. क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में तो कंडक्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वालिटेटिव स्टडी. सो यू शुड सिलेक्ट द सैंपल फर्स्ट एंड देन अपॉइंटमेंट टेकन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट.
प्योर उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि somebody is taking my interview so that I should be ready, I should be calm with the situation. कोई ऐसी सिचुएशन में ना हो कि वो आपको इंटरव्यू दे ही नहीं सकता और आप उसको फोर्सफुली लेना चाहते हो. That should be no meaning. इन्फॉर्म अबाउट द टाइम लिमिट, यस कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, यही आपका टाइम लिमिट है, इतने टाइम पे आपको बताना है. देन क्वेश्चंस शुड बी फ्रेज प्रॉपर्ली, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, प्रॉपर्ली टू द पॉइंट क्वेश्चंस होने चाहिए. और ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि योर रिस्पॉन्सेज शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियली. तब तक कोई आपसे कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेगा जब तक आपको ये नहीं कि यस आपके रिस्पॉन्सेज मुझ तक ही हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई स्टडी and it is very very confidential, and you also record your responses because सब कुछ तो याद नहीं रहता. You should keep your notes same time by recording or any other method. So what are the methods of interview? Quick information, yes हमें कोई भी information क्वेश्चनर से भी मिलती है लेकिन वो थोड़ी देर के बाद मिलेगी. इंटरव्यू से हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उसी टाइम हम ले सकते हैं. इफ द डेटा इज गुड देयर इज ए प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो जाती है. फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरव्यू में, दूसरे को भी चांस मिल रहा है. क्वेश्चनर में तो सिर्फ आप उसको क्वेश्चन दे रहे हैं और वो आंसर कर रहा है, ना वो आपसे मिल रहा है ना आप उससे बात कर पा रहे हैं. तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. देयर इज ए चांस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. देयर इज ए चेकिंग वैलिडिटी, इंफॉर्मेशन वैलिड है नहीं है आपको उसी टाइम पता लग जाता है. यूजफुल एंड इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन इलिटरेट पीपल, मैंने पहले ही बताया. देन कम्स limitations. Now, अगर इंटरव्यू यूजफुल है, लिटरेट पीपल के लिए एक्यूरेट है, वी कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, डायरेक्ट कांटेक्ट है, बट देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस. द इंटरव्यूइज कैन हाइड इंफॉर्मेशन. समटाइम वो भी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंपाइल नहीं कर सकता या बताता नहीं है. ही कैन हाइड इंफॉर्मेशन. दैट इज द वेरी big limitation on the part of the interview. Interviews are more costly. यस आपको पास जाना पड़ता है, आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है. टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड समटाइम इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल टू एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग देन क्वेश्चनर. क्वेश्चनर को आपने दे दिया विद इन 1 आवर आप कर लेते, लेकिन इंटरव्यू इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड कॉस्टली अफेयर. देयर कुड बी वेरिएशन इन रिस्पॉन्सेज. यस मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने क्वेश्चंस किसी और तरीके से पूछे, कुछ पूछा, लेकिन मेरी वही क्लास में दूसरा कोई इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, तो देयर इज अ चांस ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सेज. यहाँ जिस इंसान ने पहले इंटरव्यू मेरे को बहुत अच्छे से दिया, शायद वो उतना फैमिलियर या उतना फ्रेंडली उस दूसरे के साथ नहीं हो सकता, तो सारे रिस्पॉन्सेज आपके मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते. देयर इज अ चांस ऑफ वेरिएशन इन द रिस्पॉन्सेज. और इट इज पर्टिकुलर इन द केस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कि मैंने कोई जो क्वेश्चन से स्टार्ट किया, मे भी दूसरा उस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेगा. एंड इट्स वेरी लेस इफेक्टिव, समटाइम्स इट्स लेस इफेक्टिव. एंड इंटरव्यूअर सम में भी बायर्स, जैसे पहले इंटरव्यू की बात करते हैं हमने, दे आल्सो बायर्स इन इंटरप्रेटिंग द डेटा. So these are some kind of limitations, and with this I have concluded the data, qualitative data, types of data, and what are the techniques used in the qualitative data. With this I have concluded this. Thank you so much.